Okay, so we are going to deal with the third session of clinical immunology, and in this third session we are going to study one test which is dealing with the fixation of what? Fixation of complement. So before directly going to understand this complement fixation test, let's have a quick view on what do you mean by complement. So complement is a system. See, complement is a system of immune system in which certain proteins which are present in the blood is react with antigen antibody complex, and after reacting with antigen antibody complex they are going to create a transmembrane pore, that is a hole, and ultimately they will destruct the cell. If you don't get it yet, let's see this image. Here what do you mean by complement? Serum proteins. So these are the list of different proteins: C3, C2b, C3, C1, C3b, C5, C5b. These are the protein. These proteins are going to react with the antibody and antigen complex. So with the help of antibody and this protein complexes, a pore is created. This is a pore. Pore means a hole is created on the surface of microbes, and ultimately this results into the destruction of these microbes, that is antigen, right? So microbe is acting as an antigen here. Their destruction is being done with the help of certain proteins which are present in the blood. A whole pathway is run, and that is with the help of certain complement proteins. This system of immune system, this process of immune system is called as complement system. So now move to our topic, that is complement fixation test. Hopefully you will get to know about complement. So in this complement fixation test, it is obviously a immunomedical test in which the patient's serum is taken, and in patient's serum specific antibody or specific antigens are being detected, and whole the process is based on complement fixation. Okay, so there are 3 to 4 terms which we need to remember. In this system there will be a complement protein, there will be antigen, there will be antibody. Okay, so antigen should be there, antibody should be there, and complement protein will be there. Okay, what this complement proteins are doing? This complement proteins are going to destruct the cell. Because this is the way they are working, right? Now let's see the process. We will see the steps first, and by understanding these steps you will get to know about the principle and basic behind this complement fixation test. So these are the listed steps. Let's see one by one. What is the first step of complement fixation test is you need to take serum of a patient, right? That serum may contain antibodies for that particular antigen. See, ultimately in complement fixation test you are going to identify either antigen or antibody, because we are dealing with the clinical immunology. In clinical immunology there will be detection of antibody or antigen. So here as a sample we will collect this blood, and from blood serum will be isolated. That serum may contain antibody of against particular antigen. Okay, now thing is, the patient normally have
the patient normally have different complement proteins in their serum. So we need to destroy those serum. So the step 2 is heating of the test tube that contain the serum. This heating is done in such a way that only complement protein is destroyed, not the antibody. Okay, so heating will destroy the complement protein, and then in that tube only known amount of certain complement is added. Okay, why we are removing the complement which is already present in the blood? Because they may create negative result, negative impact on the result. That is the reason why we need to eliminate the complement protein. Now the standard complement protein which is added in the test tubes are from the guinea pig. Okay, these two steps are clear, I think. Then third step is, let's see these two steps first in order. Okay, what we are doing is, we are having the test tube. This is test tube. In this test tube, first patient serum will be there. Patient serum we need to take. Okay, so patient serum is added. Serum. Okay, this serum contain antibody. Okay, now in this patient serum it may possible that complement is already present. Complement is already present. So this complement must be removed from the serum, and that removing is done through the heating. This is how, once you do the heating, the complement will be removed. Heating is done in such a way that only complement protein is removed, not the antibody. Okay, now in next step we are going to add antigen to this. Antigen to this tube. Once antigen is added, now what was there in the tube? Initially antibody was there, then we are adding antigen, right? This is in the case of the patient having पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे कि पेशेंट के अंदर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो केस में ये जो है वो देखा जाने वाला है, उसके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी रहेगा। आपने उसके अंदर एंटीजन ऐड किया, कॉम्प्लीमेंट को आपने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इज देयर, तो दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? In that next step you need to add the antigen. We have added the antigen, and last is you need to add the red blood cell of the ship. Ship का red blood cell जो है वो आपको इसके अंदर ऐड करना है। Ship का red blood cell हम ऐड करेंगे अभी। It should be red in color. Ship का अपने red blood cell इसके अंदर ऐड करा। Now what will happen when you add ship red blood cells? Already this antigen and antibodies are in combination, so in this tube there will be no complex formation with the RBC. Say example, if you need to properly understand this, you should have two tubes. This is first tube, first tube. This tube is having positive result.
is a second tube. Step by step we will see the steps. This is a tube which is having negative result. This tube is having negative result. Okay, it will take time as I am drawing it. Okay, this is negative test, this is positive test. Positive test for antibody means this tube must contain antibody. I will suggest this as it AB, and there will be a complement protein. Here also there will be a complement protein. This is the first step. Step 1 is collection of serum. We have collected the serum. This is the collection of serum. In the patient having positive test in the serum, antibody will be there. In the patient which don't have that antibody, negative result, antibody will not be there. What is the step 2? Step 2 means heating to remove the complement. Now we are heating it so that the complement which is present will be removed. So complement is removed through the heating. Okay, simple. Now step 3, known amount of complement is added. Now we are going to add the known amount of complement. So known amount of complement should be written in red form. known amount of complement ऐड कर दिया ट्यूब के अंदर. Okay. Now after this we need to add the antigen. हम एंटीजन अभी ऐड कर रहे हैं. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किसके अंदर होगा? जिनके अंदर एंटीबॉडी है उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा. ये ट्यूब के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होने वाला है, नेगेटिव ट्यूब के अंदर, जबकि इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा. और जैसे मैंने बोला कि एंटीजन एंटीबॉडी इज कंबाइंड एंड कॉम्प्लीमेंट भी उसके साथ जो है वो कंबाइन होगा. राइट, ये पूरा एक क्लस्टर जो है वो फॉर्म हो चुका है. यहाँ पे एंटीजन इज फ्री, complement is free. In next step we are going to add RBC, red blood cell of shift. RBC of shift जो है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं. This is the RBC of shift. दोनों ट्यूब के अंदर हमने ऐड करा. अभी ये केस में क्या है, ऑलरेडी एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन हो चुका है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है. ठीक है, पर यहाँ पे एंटीजन इज फ्री, कॉम्प्लीमेंट इज फ्री. अभी हम इसके अंदर ऐड क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे एंटीबॉडी. एंटीबॉडी ऑफ व्हाट, वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ. स्टेप 6 इज एंटीबॉडी अगेंस्ट RBC. एंटीबॉडी अगेंस्ट RBC इज एडेड. ओके, तो हम RBC के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं. एंटीबॉडी अगेंस्ट RBC इज एडेड. अब कुल मिला के सीन ये हो रहा है कि यहाँ पे इन नेगेटिव ट्यूब देयर इज एंटीबॉडी, there is
complement and there is RBC. तो ये एंटीजन RBC के साथ कंबाइन होगा, एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होगा एंड दे विल कॉज lysis of this RBC as that is the nature of complement system. यहाँ पे जितने भी RBC है उनका लाइसिस हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव टेस्ट है वो नेगेटिव टेस्ट का कलर जो है वो पिंक हो जाएगा एंड दिस पिंक कलर इज ड्यू टू रप्चर ऑफ RBC। जबकि जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट था सीरम के अंदर वो एंटीजन के साथ ऑलरेडी कंबाइन हो चुका है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके साथ कंबाइन हो चुका है, इसलिए ये RBC ऐड करने पे वो RBC के साथ बाइंड नहीं हो सकता और वो RBC का रप्चर भी नहीं कर सकता। उसकी वजह से RBC जो है सारे RBC बॉटम में आ जाएंगे बिकॉज वेट ऑफ द RBC इज हायर, तो दे विल कम इन बॉटम। जबकि जो टेस्ट नेगेटिव है वो टेस्ट के अंदर RBC का रप्चर हो जाएगा एंड दे विल लुक पिंक इन कलर, राइट। तो ये एक ऐसा टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कि अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्स हुआ तो दे कैन रप्चर द RBC एंड अल्टीमेटली ट्यूब जो है वो पिंक दिखेगी, राइट। एंड इफ द ट्यूब इट लुक पिंक इन कलर दैट मीन्स द टेस्ट इज नेगेटिव, एंड अगर कोई कलर चेंज नहीं है, नीचे आपको क्लस्टर दिख रहा है, दैट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव, राइट। दिस इज द प्रोसेस। स्टेप 1 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द सीरम। 1 घंटे तक रखो तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो फिक्स हो जाएगा यहाँ, तो कॉम्प्लीमेंट गेट फिक्स। स्टेप 2 में हीमोलाइटिक सिस्टम डालो, पर कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फिक्स होने की वजह से हीमोलिसिस ऑफ RBC नहीं होगा, इसलिए टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कही जाएगी। जबकि नेगेटिव टेस्ट में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट डाला हुआ है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं होगा नेगेटिव टेस्ट में, वो कॉम्प्लीमेंट फ्रीली अवेलेबल रहेगा। जो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने RBC डाला तो वो RBC का हीमोलिसिस कर देगा, इसलिए ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। दो कलर फॉर्म हो रहा है, पर कलर क्यों फॉर्म हो रहा है, फ्री कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल था इसलिए। फ्री कॉम्प्लीमेंट क्यों अवेलेबल है, क्योंकि फर्स्ट आवर के टाइम पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नहीं हुआ था, राइट। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। This whatever is written here is just the explanation of what I have explained to you, right? If the turning pink, that means the taste is negative because complement was free. Complement free क्यों था, because सीरम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उसने वहाँ पे एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करा था फर्स्ट स्टेप में, राइट। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल टेस्ट, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।